हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके सामने करने वाला हूँ ये मिनिएचर पेंटिंग। एक लैंडस्केप है, उसमें कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ ट्रीज़ हैं और रिवर। बहुत ही शानदार पेंटिंग है ये। और इस पेंटिंग को मैं एक्रेलिक कलर के साथ करूँगा। बहुत छोटा सा पेंटिंग है पर काफ़ी डिटेलिंग की गई है इस पेंटिंग में, बहुत रियलिस्टिक लग रही है। आप सब भी मेरे साथ ये पेंटिंग ट्राई कर सकते हैं। इस पेंटिंग को करने के लिए मुझे सिर्फ 2-2.5 घंटे लगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से मैंने इसका स्केच किया और फिर किस तरह से मैंने कलरिंग किया। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की पेंटिंग ट्यूटोरियल्स, ट्रैवल ब्लॉग्स और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए। सो लेट्स बिगिन दिस पेंटिंग। पूरा वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा। तो इसके लिए मैंने 6 इंच बाय 6 इंच का कैनवास लिया है और सबसे पहले हम स्केच करेंगे। इसके लिए HB का ये पेंसिल है। कुछ ब्रशेस जो मैं यूज़ करूँगा वो एक बहुत छोटा सा फ्लैट ब्रश, एक थोड़ा बड़ा फ्लैट ब्रश, 2 पॉइंटर ब्रश, ये 4 ब्रश यूज़ करूँगा। जो कलर्स में यूज़ करूँगा वो है एक्रेलिक कलर्स। वाइट कलर है बर्न अम्बर, येलो, सैप ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू, परमानेंट ब्लू लाइट and olive green. So these are the colors which I am going to use for this painting. और मीडियम के लिए जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो प्लेन वाटर है। So let's begin with the sketch. तो इस कैनवास के हम 3 बराबर हिस्से कर लेते हैं। this तो ये हमारा पोर्शन रहेगा जहाँ पर ट्रीज़ और माउंटेन्स रहेंगे। ये पोर्शन रहेगा जहाँ हमारा लैंड रहेगा और दिस इज़ आवर स्काई। सो लेट्स बिगिन विथ माउंटेन्स। सो गाइज, हमारा ये स्केच बन गया है। लेट्स सी हाउ इट लुक्स आफ्टर द पेंट। तो हम शुरू करते हैं अपना पेंटिंग। सो गाइज, हमने कलर्स ले लिए हैं पैलेट पे। आप देख सकते हैं ये है परमानेंट ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, बर्न अम्बर, वाइट, येलो, सैप ग्रीन एंड ऑलिव ग्रीन। सो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्काई से। इसके लिए मैं वाइट, परमानेंट ब्लू, कोबाल्ट ब्लू भी मिक्स कर लेता हूँ। सो दिस इज आवर sky. So let's begin with the sky.
इसमें क्रिस क्रॉस स्ट्रोक्स ही करूँगा मैं इन द स्काई। टेक अनदर, some blue, some white. It's very nice color. Okay guys, so let us now make the color for mountains. Mountains के लिए मैं थोड़ा सा olive green लेता हूँ, थोड़ा blue लेता हूँ, so it's a bit darker tone you can see, and then I will mix bit of this color. Very nice tone it is coming out, cobalt blue, permanent blue, एंड देन थोड़ा सा ग्रीन, और इसमें मिलाते हैं वाइट। तो थोड़ा इसमें परमानेंट ब्लू भी डालते हैं एंड टिंच ऑफ कोबाल्ट ब्लू, तो थोड़ा ब्लूइश माउंटेन रहेगा हमारा। ओके, वेरी नाइस। आप देख रहे हैं अभी तक मैं एक ही ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग अदर ब्रशेस सो फार। आई विल बी यूजिंग सम ऑफ दोज ब्रशेस फॉर द फाइन ट्यूनिंग ऑफ द कलर्स और मीन्स डिटेलिंग। Okay, so first layer of mountains हो गया है। अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग के लिए मैं जो है बर्न अम्बर ले रहा हूँ, थोड़ा सा सैफ ग्रीन मिक्स किया, थोड़ा डार्कर टोन बनाया, थोड़ा उसमें ब्लैक भी किया। अब हम कहीं कहीं इसको ऐसे इम्प्रेशंस लगाएंगे, डार्क, नॉट सो मच। सो ये जो है बर्फीला पहाड़ बनाना है हमें। सो इसके ऊपर थोड़ा स्नो जमा हुआ या आइस उस तरह का इफ़ेक्ट भी लाएंगे। तो आप देखते रहिए किस तरह से हम वो इफ़ेक्ट लेके आएंगे अब इस पेंटिंग में। थोड़ा सा डार्क है। ओके, थोड़ा वाटर लेके हम इसको ब्लेंड कर दें जहाँ जहाँ ब्लेंड कर सकते हैं, तो इससे एकदम से कंट्रास्ट नहीं दिखेगा। तो इट शुड लुक, थोड़ा सा ब्लेंड करके स्मूथ हो रहा है कलर विथ वाटर। कहीं कहीं टेक्सचर। अब हम थोड़ा वाइट लेते हैं और वाइट को लाइट ब्लू के साथ मिक्स करा, थोड़ा और वाइट लिया। अब हम जो है इसमें स्नो का इफेक्ट देने की कोशिश करेंगे।
कहीं कहीं, पूरे पोर्शन में नहीं, थोड़ा सा इसको हाइलाइट्स टाइप का वाइट यूज़ कर रहे हैं। और ये एकदम वाइट नहीं है अभी, दिस इज समवेयर स्काई ब्लू टाइप का कलर है। स्ट्रोक्स के ऊपर ध्यान दीजिए आप, हल्के हाथों से लगाया हुआ स्ट्रोक्स हैं। ओके, अब हम थोड़ा इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं जहाँ जहाँ हो सकता है। अब हम प्योर वाइट लेते हैं। प्योर वाइट के लिए हमारा पहाड़ लगभग बन गया है। थोड़ा इधर और वाइट हम कर सकते हैं, तो इसको बाद में फिर से रिविजिट करेंगे हम, अभी के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। अब हम करने वाले हैं काम, जो बैकग्राउंड में पेड़ है उसके ऊपर, तो वो प्योर ऑलिव ग्रीन ही है। उसमें थोड़ा बर्न अंबर मिक्स किया है मैंने, तो द्वार के एक बार टोन बनेगा। इतना ज़्यादा थोड़ा ग्रीन भी मिला देते हैं। सो दिस इज़ द एरिया जो आपको बहुत ध्यान से बनाना है। तो ये थोड़े थोड़े बीच बीच में ऊपर की तरफ जाते हुए ट्रीज़ भी हैं, जो आपने देखे होंगे दूर से बैकग्राउंड में। इस तरह के ट्रीज़ दिखते हैं आपको जब आप ट्रैवल करते हैं किसी पहाड़ी एरिया में। ये कलर जो है एकदम डार्क कलर है, तो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है ब्लू एंड ग्रीन का। बड़ा अच्छा एक वेरिएशन आया है कलर में, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा और कलर मिक्स कर लेते हैं, कम पड़ गया तो मिक्स सम वाटर। तो इसमें हम थोड़े कहीं कहीं ऊपर तक ले जाते हैं। देयर आर सम एरियाज जहाँ पर आपको ट्रीज ऊपर तक बड़ा लंबा दिखाई देगा, कुछ एरियाज में ट्रीज। अब हम इसका इसी कलर के साथ इसको बेस में जस्ट फिल दैट कलर विद द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। ओके, now look at this. Okay, now let's work on this land from here. So we'll use the lightest one here, then bit darker. So there will be 3 tones. So let us mix yellow, then pinch of some sap green, so not very dark green, but yeah, the medium one. Okay, then the same color with some more sap green but less of the yellow. Okay, so it is a middle tone. Then we'll have sap green. So these are like 3 colors we are going to work with, and I'll mix somewhat white. So here let us fill this
Very nice color. Again, this is giving some contrast, dark green to lighter green. Here the strokes will be horizontal strokes like this. Now we'll move to the next color, which is, as I said, bit greener than the previous one, but this is also green tone only, but bit darker. So you can see, let's go back and use some more I'm using plain water now to blend it a bit. Very important to blend this color. It should look like a transitioning the colors. Now let us go and use the darkest one, which is simply sap green on top. Right. I'll be using more olive green, so to give some darker edges. Nice. So let us now work on the river. So for river we are going to use the same colors, blue color, and then cobalt blue and permanent blue. So let us begin with this from somewhere here. It's coming. Dark one. So you can see I'm using the darkest tone the right side of the river, so that like bit of the contrast. Okay, now from left side I'll be using bit of lighter tone, so you can see, and then I'm using the horizontal stroke and try to blend it. Okay, bringing back the darker from right to left. You have to use your colors fast because acrylic color get dry very fast. So now look at here, so almost one layer is done. I'm using some water. Okay guys, so look at the transition. Now we have to do some of the blending. I'm picking up the dark one again, and then from right
to left, I'm pressing my brush a bit, so it is kind of getting merged a bit. Okay, now first coat is done. Now I'm going to use brown and mix this cobalt blue, bit of the darker tone, again brown, and so very fine brush I have to use. Now this is the finest brush I will pick up now, and then I'll create a kind of a border with this color. Okay, look at here. Now I'll give some impression in the water, like water is flowing, you know. Okay, here also some big ones, and here some small ones. Okay, some flow in the water with the darker tone, right? Okay, to complement that, now I'll pick up pure white, and then from some section here I'll start giving bit interesting figure. So some of the strokes which I'm going to use will look like that water is flowing. Mix this color and leave it like this. Now we have to work on these stones here. So for that I'll create a base color. Base color is your brown again, similar, and then I'll use a bit of blue and olive green, so that it will create nice dark color. So let me first work on this stone here very close. Okay, so you have to just put the darkest one first, give some shapes to the stones, if not fully small one. The more you go towards the hillside or the mountain side, your stones will start appearing a bit small, right? Because you can see them from far. Similarly, the stones which are close, give some stones. Now I will create one lighter tone using brown with white mix. So bit of brown and bit of white. So before it get dry, I'll try to put some texture on this. Okay, every stone will have 3 tones. One, the darkest one which we already used, then the medium one which I am currently using, and then it will come to complement with the lightest one. Okay. And from this side light is coming, that is why I am trying to show. So here from this side you can see the lighter one, right? The right side of each stone is bit of lighter tone, and then the left side is the dark one which we already used here. Now
one more lighter tone I'll do. So I'll use more white with the brown, so it will become a lightest. So I'll not use much there, so I'll be using some impression, very light, very okay. So this is done, the stones are done, ground is done, background plants are done, hill is done, and then the sky is done. Now we have to work on this straight but long trees. Let's start. Now for trees we are going to use white, and then some shading we'll give with the brown, right? So it's a white tree, right? So we have to use the smaller brush for it. So let's start with this tree. मैंने एक थोड़ा लाइटर ब्राउन कलर बना लिया है, जिससे मैं थोड़ा सा इसके एजेस में यहाँ शेड करूँगा, जिससे ये थोड़ा सा राउंड टाइप का दिखेगा। एंड देन विल डू वन मोर राउंड ऑफ वाइट एंड देन सम शेडिंग। एक लेयर और करते हैं ट्रीज के ऊपर वाइट कलर से। अब मैंने एकदम पॉइंटर ब्रश ले लिया है बारीक सा, उसमें वाइट और थोड़ा ब्राउन मिक्स करता हूँ और थोड़ा ब्लू, तो डार्किश टोन बनता है। अब इस पे हम कहीं कहीं इस तरह से इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। सैप ग्रीन और ब्राउन के साथ। अब हम थोड़ा सा इससे वाइट का टच देंगे ब्रांचेस में। थोड़े हम ग्रास बनाते हैं यहाँ पर। थोड़े ट्री के ऊपर यहाँ पर कुछ लीव्स बनाते हैं। उसके
इसके लिए भी मैं फाइन ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी पेंटिंग बनके तैयार हो गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने सारी प्रोसेस में आपको बताई, किस तरह से मैंने स्केच किया, फिर कैसे कलरिंग किया। होप आप भी ये पेंटिंग बनाएंगे और प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ ये पेंटिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर वीक लेके आता हूँ आपके लिए पेंटिंग ट्यूटोरियल्स, ट्रैवल ब्लॉग्स और बहुत सारी अलग टॉपिक्स पे वीडियोस। स्टे ट्यून। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।